Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Wednesdays. Technical Wednesdays में आप सभी का स्वागत है and this is one more episode in this beautiful series. This is sort of month start special Technical Wednesdays जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे that पिछले 3 दिनों में क्या हुआ है and almost by the start of this month itself हमें क्या देखने को मिला है in terms of Nifty and Bank Nifty. क्या ये मेजर बॉटम फॉर्मेशन है या फिर यहाँ से और हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है या थोड़ा और कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है ऑन द लोअर साइड. That's what we are going to analyze in this episode. So make sure you watch this till the end. And हम लोग जो है टॉप डाउन अप्रोच करते हैं फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव यूजिंग 3 टाइम फ्रेम्स. दोज आर मंथली, वीकली एंड डेली, where monthly depicts long term trend, weekly depicts medium term trend, and daily depicts short term trend. And we are going to use simple price action, Bollinger Bands, and RSI so as to understand कि प्राइस पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, बॉलिंजर बैंड्स के हिसाब से वोलेटिलिटी क्या चल रही है मार्केट में, एंड आरएसआई के हिसाब से मार्केट में मोमेंटम कितना है, वेदर इट इज इन एन अप ट्रेंड, इन अ डाउन ट्रेंड या फिर इन अ साइडवेज ट्रेंड. वही हम लोग ओवरऑल एनालाइज करेंगे तीनों टाइम फ्रेम्स पे ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. सो मेक श्योर आप स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे से देखो बिकॉज द वे आई एम डूइंग एनालिसिस ऑफ बोथ ऑफ दीज इंडेक्स, you can do the same analysis in other indices and you can do the same analysis in stock specific as well, so as to filter out the stocks for your swing trading purpose and so on. And अगर आप टाइम फ्रेम को और छोटा कर दो, like daily, hourly 15 minutes, hourly 15 minutes, 5 minutes, तो आप BTST और intraday trading भी कर सकते हो using the same approach which we are going to look forward in this episode. So once again, welcome to this beautiful series of Technical Wednesdays, and we'll do the overall top-down approach of Nifty and Bank Nifty. Right. So सबसे पहले शुरू करते हैं Nifty 50 का जो मंथली चार्ट है वहां से हम शुरू करेंगे. सो मंथली चार्ट इज टेकिंग प्रॉपर RSI 60 सपोर्ट एंड यहाँ पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लिया है विच इज एक्चुअली वेरी गुड. एंड जब RSI 60 का सपोर्ट लेता है कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी स्टॉक हो, विच मीन्स इट इज मेंशनिंग आई एम वेरी बुलिश. तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉर द टाइम बीइंग इज मेंशनिंग दैट आई एम very bullish, so we have to keep an eye from long perspective. Then we have weekly chart जो कि again consolidation में ही है so far, and let's see whether it is going to form proper support from here or not, and it is going to confirm on the positive side or not, because अगर वो confirm करेगा तभी जाके monthly candle जो है वो properly 60 का support लेके ऊपर sustain करेगी. Otherwise it will be considered as a false support, because that will get converted into either an indecisive candle or a bearish candle. Then we have daily chart जो कि already lower top lower bottom बना रहा था, but this time it has formed almost kind of similar bottom बनाया है. बट देखा जाए तो विद रिस्पेक्ट टू RSI ऑल्सो यहाँ पे RSI में भी डाइवर्जेंस है विच इज क्लास B bullish divergence. And if you don't know about this, make sure you check out our basics of technical analysis series या फिर आप RSI mastery series भी check out कर सकते हो, so as to understand that what all RSI divergence is all about. उसमें मैंने basic divergence भी बताया है class ABC, and मैंने advance भी बताया that is PRD and NRD, so make sure you check it out. एंड यहाँ पे जो है अभी RSI 40-60 के बीच में है, मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस एक्शन चल रहा है. सो लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू एक्चुअली ब्रेकआउट और एल्स इट इज गोइंग टू गो इन अ कंसोलिडेशन जोन, बिकॉज जब तक वो 40-60 के रेंज में है तब तक ना हमें लॉन्ग साइड ट्रेड्स लेने हैं ना हमें शॉर्ट साइड ट्रेड्स लेने हैं. वी हैव टू बी अ फेंस ईटर and we just have to wait for proper confirmations either on the bullish side or on the bearish side. Right. That's what the overall view for Nifty 50 is all about. And let's quickly have a look at Bank Nifty, because Bank Nifty is slightly underperforming as compared to Nifty 50. यहाँ पे मंथली चार्ट देखा जाए तो मंथली इज लाइक पहले निफ्टी 50 का देखा जाए तो उसने ऑल टाइम हाई जोन के आसपास डबल टॉप बना के आउटसाइड इनसाइड पैटर्न बना के उसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया था. बट निफ्टी बैंक में ऑल टाइम हाई जोन से ही सीधा ये जो है छोटा सा रिट्रेसमेंट आया था. बट राइट नाउ इट हैज taken proper RSI 60 support, but let's see whether it is going to confirm this or not, because this confirmation will happen once we have proper support from the bull side, because last month भी यही हुआ था. पहले 2 हफ्तों में proper bullish candles फॉर्म हो रहे थे, but unfortunately लास्ट 2 हफ्तों में जो हमें रिट्रेसमेंट फिर से कंटिन्यू होते हुए दिखी, because of which monthly candle also got converted into a bearish one. So this time like we can't presume that monthly candle bullish ही बनेगी. बन सकती है based on proper support zone formation and based on proper bullish movement on weekly and daily chart. तो वीकली चार्ट में यहाँ पे देखा जाए तो वीकली चार्ट भी 40-60 के बीच में है, बिलो मूविंग एवरेज, एंड दिस इज एक्चुअली नॉट अ गुड साइन.
एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो CIP वाला रीजन भी बन रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नाउ गेटिंग फॉर्म्ड, नाउ वर्किंग एज अ सपोर्ट, सो CIP भी काफी स्ट्रॉन्ग वे में वर्क करता है. So let's see whether it is going to get confirmed or not, because RSI is also between 40-60, and the worst part here, like you know the weak point about bank nifty is that वो moving average के नीचे sustain कर रहा है, whereas nifty 50 is slightly performing around that region itself. Then we have a daily chart of bank nifty. यहाँ पे देखा जाए तो lower top lower bottom series ही बनती आ रही है, and यहाँ पे जो है पिछले 5 दिनों से कैंडल्स वहीं के वहीं बन रहे हैं. फर्स्ट वी हैड अ बेरिश कैंडल, देन वी हैड एन इंडेसिसिव कैंडल, देन अ बुलिश कैंडल, देन अ बेरिश कैंडल, एंड आज के दिन में हमें बुलिश कैंडल फॉर्म होते हुए दिखी है. बट RSI में देखा जाए तो RSI के हिसाब से प्रॉपर यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है. बट लेट्स सी वेदर दिस पर्टिकुलर डाइवर्जेंस इज गोइंग टू वर्क ऑन द बुलिश फेवर और नॉट, बिकॉज जब तक इस डाइवर्जेंस को कंफर्मेशन नहीं मिलेंगे तब तक इट्स नॉट गोना मेक सेंस. एंड यहाँ पे देखा जाए तो ये प्रॉपर बुलिश साइड का डाइवर्जेंस है, दैट इज क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस. प्राइस वहीं का वही है, बट RSI ऊपर के साइड टर्न मार रहा है. सो दैट्स व्हाट द थिंग इज ऑल अबाउट. बट अगेन यहाँ पे मूविंग एवरेज के भी रेजिस्टेंसेज हो सकते हैं, प्रीवियस टॉप्स के भी रेजिस्टेंसेज हो सकते हैं, एंड अगेन वी हैव अ प्रिटी डिसेंट रैली रिमेनिंग फॉर बैंक निफ्टी टू reach all-time high zone and sustain above all-time high zone and form new highs and so on. So तब तक के लिए we can trade in Nifty 50, or else we can opt in for stock specific index, not stock specific, we can opt in for sector specific index. जो भी sectors outperform कर रहे हैं, like we also discussed about auto sector in the latest this one weekly mastermind. उससे पिछले वाले में भी मैंने ऑटो सेक्टर के बारे में ही बताया था, and there are 1 or 2 more sectors which are actually performing good, like secondary sectors जैसे बोल सकते हैं, जो हम लोग weekly mastermind में discuss नहीं कर सकते हैं, but like we don't discuss it in weekly mastermind, but you can actually do your own analysis in those sectors as well. काफी सारे sectors हैं, you can just do your own analysis and you can filter out कि कौन से sectors outperform कर रहे हैं, कौन से sectors underperform कर रहे हैं. जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें स्टॉक स्पेसिफिक में जाके आपको एनालाइज करना है कि कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें आप लॉन्ग साइड ट्रेड्स ले सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रॉपर सेटअप्स, जो भी आपने कहीं और से सीखे होंगे, या फिर यू माइट हैव लर्न फ्रॉम आवर कम्युनिटी एंड फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल, और वेरेवर फ्रॉम वेरेवर यू हैव लर्न, तो आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करके ट्रेड्स ले सकते हो फ्रॉम लॉन्ग पर्सपेक्टिव फॉर द स्टॉक्स which are performing good on the bullish side, and you can short the stocks which are underperforming or weak performing and so on. So I hope that you are clear with this, and make sure जैसे मैंने इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है, उसी वे में आप सारे सेक्टर्स का एनालिसिस करो, so as to understand that what's all happening in the market, और कल के दिन में क्या हो सकता है. ऑल्दो फ्राइडे को छुट्टी है जैसे कि मैंने बताया, सो आई एम प्लानिंग दैट वीकली मास्टरमाइंड को हम लोग थोड़ा जल्दी पोस्ट कर लेंगे, लाइक मे बी ऑन सैटरडे एट द सेम टाइम, दैट इज 5 PM. बट अगेन दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. I'll just have a discussion with my team and then we'll move forward with it. But that's what the overall thing is all about, and I hope that you have got enough value from this epic episode. And do share below जो भी आपके जो भी आपके लर्निंग्स है, लेसन्स है इस एपिक एपिसोड से, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. इफ यू हैव एनी अदर रिकमेंडेशंस और सजेशंस विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्रूवमेंट्स व्हिच वी कैन डू, या फिर हम और किस वे में एनालिसिस कर सकते हैं, लाइक कौन से सेक्टर्स को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, या फिर लाइक व्हाटएवर आइडियाज आर कमिंग इन योर माइंड, मेक श्योर यू शेयर इन द कमेंट सेक्शन. स्टॉक स्पेसिफिक का हम एनालिसिस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस पार्ट, but we can do the analysis of sector specific, so we are open for that as well. And make sure you hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.